Okay, guys, Assalamu alaikum. The purpose of this video is to explain the interference of waves. Either it is interference of light or interference of sound waves. ठीक है? The basic topic, like as per the syllabus, is interference of light, but we will first discuss generally the interference. What is the interference? So, all right, hold on. Yeah, interference refers to the result of superposing. Superposing means meeting of two coherent waves passing through the same region. ये एक जनरल डेफिनेशन होगा इंटरफेरेंस की. Interference refer to the result of superposing two coherent waves passing through the same region. Now, what does this coherent waves means? Look at this one. Coherent waves. Two waves of same type or same nature are said to be coherent if there is a constant phase difference between them. मतलब दो वेव्स एग्जिस्ट करें और उनके बीच में एक फेज डिफरेंस होना चाहिए. वो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, वट एवर इट इज़, लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए. राइट, दिस इज कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स. सो इंटरफेरेंस दो वेव्स के मिलने को कहते हैं, लेकिन वो दो, वैसे तो अगर जनरली दो वेव्स मिलें तो इसको कहते हैं सुपरपोजिंग ऑफ टू वेव्स, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पहले स्टडी कर चुके हैं. नाउ सुपरपोजिंग या मीटिंग ऑफ वेव की एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें कोहेरेंट वेव जब मिलती हैं तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं. अदरवाइज जनरली वेव्स अगर मिलेंगी तो वो सिंपली मीटिंग अप ऑफ वेव्स कहलाएगा. और कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं? ऐसी दो वेव्स जिनकी नेचर सेम हो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होनी चाहिए, मैकेनिकल के साथ मैकेनिकल होनी चाहिए, उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए. नाउ फॉर लाइट और इधर साउंड, लाइट ईएम वेव हो गई, साउंड मैकेनिकल वेव हो गई. अगर लाइट या साउंड मींस के हर वेव इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन इंटरफेयर करने के लिए, ठीक है, मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस. द कंडीशंस नंबर 1, तीन कंडीशंस हैं. वेव सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक. मतलब वेव सोर्सेस से मुराद ऑब्वियसली मीट करने के लिए दो वेव्स चाहिए, तो दोनों वेव्स मोनोक्रोमैटिक हों, मतलब उनकी सिंगल वेव लेंथ हो, प्योर वेव लेंथ हो, लाइक सिंगल कलर. नंबर 2, सेकेंड कंडीशन, कोहेरेंसी. दे शुड मीट कोहेरेंसी, कोहेरेंट सोर्सेस. और कोहेरेंसी हम अभी बता चुके हैं कोहेरेंसी किसे कहते हैं. एंड द थर्ड वन इज वेव मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड और नियरली सेम एम्पलीट्यूड. ये तीन कंडीशंस अगर दो वेव्स फॉलो यानी सेटिस्फाई कर रही हैं तो दे कैन इंटरफेयर. ईदर इट इज साउंड वेव और लाइट वेव. एक एनबी, एक नोटबुक पॉइंट चेक कीजिए. इंटरफेरेंस डज नॉट अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स. इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस of a wave. Interference refer to the result of superposing two coherent waves passing through the same region. And the coherency is when the two waves of same nature should have a constant phase difference. So they meet the coherency condition. In general, interference required following conditions to be satisfied. 1. Wave sources must be monochromatic. They should be coherent and they must have same amplitude. And finally, interference does not affect the frequency of a wave. Now, we are moving towards two type of interference pattern. There are generally two type of interference pattern: constructive interference and destructive interference. Let's see what is constructive interference. When two coherent waves having same frequency superpose in phase situation, they reinforce each other and the resultant amplitude is the sum of individual amplitudes. दो कोहेरेंट वेव्स जब मीट कर रही हों तो उनके दरमियान में फेज सिचुएशन इन फेज हो. मतलब अगर 180 डिग्री का फेज एक वेव के पास है तो दूसरी वेव के पास भी 180 डिग्री का फेज होना चाहिए, तो ये इन फेज कहलाएंगे. अगर 90 डिग्री का फेज है तो दूसरी वेव के पास भी 90 डिग्री का फेज एंगल होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Same way, destructive interference. When two waves having same frequency superpose outphase, they cancel out each other and the resultant amplitude is a difference of the individual amplitude. मतलब they outphase meet
कर रहे हैं तो वो सिंपली कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट हम जो निकालेंगे वो उनके उस वक्त मौजूद एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस निकालेंगे। अब ऑब्वियसली अगर दो वेव्स आउट फेस इंटरफेस करती हैं, आउट फेस का मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वैसे ही कैंसिलेशन में जाता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो बनता है। हाउ टू लोकेट कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द वेव, सी द इंटरफेरेंस पैटर्न अटैच फाइल में अटैच करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं दोबारा एक दफ़ा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दूँ, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूँ। कंसिडर अ सोर्स ऑफ वेव ए, a source of wave B. Hold on. Yeah. Source of wave B here, and C here. All right. Now, this red arrow is the location where we are going to study the interference situation. Now, let me just draw a highlighter, a reference mark. Okay, now see, wave source A. The wave source A is starting from this direction. The direction of travel is in this way. Okay, that's a wave source A. Now look at wave source B. Wave at the same time, इस red arrow पे this is a time instant. This is a time instant t जिस वक्त मैं इंटरफेरेंस को स्टडी कर रहा हूँ, इस लोकेशन पे स्टडी कर रहा हूँ, और अक्रॉस दिस वे अब इस लोकेशन पे स्टडी कर रहा हूँ. ओके, सो नाउ द वेव बी is how see it's passing through. Sorry, it's also going this way. Now if I just simply say A and B, if I want to interfere, I believe A and B are coherent waves, they have constant phase difference. ठीक है. Now wave A starting from this point, wave B starting from this point. एट द मोमेंट अगर मैं ए और बी को कंबाइन करूँ, इंटरफेयर करवाऊँ, तो रिजल्टेंट वेव में क्या है इस वक्त, ए के लिए क्रस्ट आ रहा है, बी के लिए ट्रफ आ रहा है. मतलब ये दोनों आउट फेज हैं. तो अगर जवाब सी है, लेट्स से ए एंड बी आर टू सोर्सेस, और उनको कंबाइन कर रहा हूँ ए प्लस बी, आई एम गेटिंग द रिजल्टेंट वेव सी. तो नाउ सी पे मुझे क्या मिलेगा, कैंसिलेशन मिलेगी. क्यों? बिकॉज के ए एंड बी एट द मोमेंट आर मीटिंग अप इन आउट फेज सिचुएशन. सो क्रस्ट से ट्रफ कैंसिल हो जाएगा. इस पॉइंट पर मेरे पास डेडलाइन आएगी, फिर कैंसिलेशन हो रही है, ये कैंसिल ये कैंसिल. नेक्स्ट, अब क्योंकि ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखते हैं, तो अब ये वाला ट्रफ इस वाले क्रस्ट से कैंसिल होगा. आई विल हैव अगेन अ जीरो लाइन, एंड सेम वे आई हैव नो एम्पलीट्यूड एट ऑल. सो दिस इज द रिजल्टेंट, सी इज द रिजल्टेंट वेव. और एट द मोमेंट क्योंकि मुझे रिजल्ट में कुछ नहीं मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Right, this is called destructive interference. So A and B are meeting up, having constant phase difference, but they are meeting in such a way they are completely cancelling out each other. So we have nothing here. So that's called a destructive interference pattern. All right. So अब हम बात करते हैं constructive interference pattern की. Wave A उसी तरह बनी हुई है. Okay, मैं दोबारा बनाता हूँ. Okay. Now wave A, wave B, and so on. Now the wave C is, now it's a crust and a crust. Constructive interference में when they meet, they reinforce each other, and the resultant amplitude is the sum of their individual amplitude. So let's say अगर it's ये amplitude A है, this is also A and A, so then wave C must have double the amplitude here, double the amplitude here.
double the amplitude here, double the amplitude here. So if I am getting the addition of the two waves, a net displacement larger than the individual ones, that's called constructive interference. ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं. सो इस तरह हम डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं. तो रिजल्टेंट जो है वो इसका डबल हो रहा है, ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशन में वी हैव, अगर ये दो साउंड वेव्स हैं, वी हैव अ लाउड साउंड. इफ दीज आर टू लाइट वेव्स, वी हैव अ ब्राइटर इमेज. जहाँ जहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ ब्राइटर इमेज होता है. जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पर लो लेस ब्राइटनेस या डार्क रीजन क्रिएट होता है. इसी तरह अगर साउंड है तो लाउड साउंड आएगी और फेंट साउंड आएगी. दिस इज़ द आइडिया ऑफ इंटरफेरेंस. राइट नाउ ये एक थ्योरेटिकल सिचुएशन है. ये जो पूरी डायग्राम मैंने बनाई है दैट्स अ थ्योरेटिकल सिचुएशन. लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे स्टडी होता है. इसके लिए लेट मी शो यू, होल्ड ऑन, सी बैक and it's in an image. The images are here. Okay, come on, where is the image? Yeah. Okay, now figure shows wavefronts incident on and emerging from a double slit arrangement. Double slit क्या होती है हम बाद में बात करेंगे. At the moment, see this diagram. Okay, from these two slits wave is coming. Okay, now so this is the one wave pattern, from this direction. This is the second wave pattern from this direction, and they both are proceeding this way. ठीक है, and they're spreading out as well. So you can see now two waves. Now they are meeting up. You can see the intermingle situation. That's an intermingle situation over here. कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जो कि मीटअप हो रहे हैं. अब इस मीटअप में हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. For this one, you need to recall, first of all, the definition of wavefront. Wavefronts are the imaginary lines drawn on a wave pattern. एक वेव रियल में जो एग्जिस्ट करती है, अगर उसको पेपर पे बनाना है तो पेपर पे बनाने के लिए हमने एक टूल डिसाइड किया हुआ है. Wavefront is a tool to show the diagram of a wave in a simpler mode. So wavefront जब भी बनाए जाएंगे either on a crust or on a trough. So अगर ये एक wavefront इस वक्त नज़र आ रहा है आपको और ये दूसरा वेवफ्रंट नज़र आ रहा है तो इधर इट इज़ ऑन अ फर्स्ट क्रस्ट एंड इट्स ऑन अ सेकंड कंसेक्टिव क्रस्ट. सो इट मीन्स इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन होगा, ट्रफ. यहाँ पर कौन होगा, ट्रफ. सो क्रस्ट, दिस डॉटेड लाइन, ट्रफ, राइट. क्रस्ट, डॉटेड लाइन, ट्रफ. अगेन क्रस्ट, डॉटेड लाइन, ट्रफ. क्रस्ट, ट्रफ. So if I just go back where I was explaining interference. So crust and crust when meet, they create double of the crust. Crust and trough, when they meet, they cancel out each other. This is what we just studied. So over here now, alright, so these are the wavefronts. They are approaching towards these small slits. So when they come out, they will spread out in the region. Now let's say it's a source 1, source 2. So अब ये दो independent patterns यहाँ नज़र आ रहे हैं, right? So now where you can find the intersection point, the first intersection point, the second intersection point, third one, fourth one, fifth one, sixth one. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स का मतलब ये है S1 से आने वाली सोर्स का क्रस्ट S2 से आने वाली सोर्स के क्रस्ट से मीट कर रहा है. सो क्रस्ट से क्रस्ट जब मीट करते हैं तो डबल द क्रस्ट होता है. तो इसका मतलब दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट
अगर ये लाइट वेव है तो यहाँ ब्राइटनेस होगी या ब्राइट स्पॉट होगा। अगर ये साउंड वेव है तो यहाँ पर लाउड साउंड हर्ड हो सकती है। सेकेंड क्रस्ट इज ओवर हियर, थर्ड क्रस्ट, सॉरी सेकेंड ब्राइट पॉइंट, first bright point, second bright point, third bright point, fourth, fifth, sixth. Same way, this is also the bright point, this is also the bright point, this is also the bright point, and a bright point. Same way here, 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 and here. अब ज़रा ये डायग्राम इसने यहाँ नहीं बना, यहाँ तो बना रहा है, इधर नहीं बना रहा. So we leave that area. We have this way. सो एक इस तरह के डायफ्रैक्शन पैटर्न में अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ढूंढना है, ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर द कंस्ट्रक्टिव रीजन्स, यानी इस पूरे रीजन्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. यहाँ तो ब्राइट लाइट नज़र आएगी, यहाँ साउंड ब्राइट लाउड साउंड हर्ड होगी. नाउ एग्जैक्टली इन बिटवीन, अब अगर मैं ओके ना, आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग द ब्राइट रीजन एरिया. These all are the brighter region areas. इस डायरेक्शन में अगर कोई, if just try to see with the naked eye, he will see a bright series of bright spot at this direction, another series of bright spot over here. So technically crust and crust के बीच में trough होता है. So अब now this line, if I just change the color, let's say blue one. So this region, this region, this region, this region, if I move my eye over here, or move my eye over here, so I will see the dark points, dark regions, or a faint. If I place an ear, I will hear a faint sound. Or a microphone is there, it will detect a faint sound. So लाइट डिटेक्ट करनी है, आँख से डायरेक्ट लगा कर देख सकते हैं, मतलब अपनी आँख खुद नहीं निकलनी है. ऑब्वियसली यू कैन प्लेस योर आई एट दिस लोकेशन एंड यू कैन सी द ब्राइट स्पॉट, बट द डार्क स्पॉट द सेम वे द ब्राइट स्पॉट. So this is a bright one, this is a dark one, that's a dark one, that's a dark one, that's a dark one, and that's a bright one, that's a bright one, that's a bright one, that's a bright one, that's a bright one. At the moment, the center position, this location, it's coming right directly from the origin or the center point of the two sources. So this is considered the brightest point. The brightest point, the loudest sound. Now I'm traveling away from the brightest area. So I have again brightest point, but that is not that bright. It's a little bit less than this one. So जैसे जैसे मैं इस लोकेशन से इस लोकेशन या इस लोकेशन पर आता हूँ तो ब्राइटनेस कम हो रही है, लेकिन स्टिल आई विल गेट द ब्राइटनेस, उसका लेवल चेंज होता रहेगा. सेम वे ओवर हियर and same way over here. In the similar fashion, we can also discuss the faint, further faint, faint, and then further faint, and so on. तो ये patterns अपने आप को repeat करते हैं. If I place a white screen paper, the white screen paper, let me just first of all again just this way. Okay, so if I just place a white screen paper, so this is the spot of the region of bright spot, region of bright spot, region of bright spot, another region of bright spot, another region of bright spot, right? So I will see a pattern of bright and dark, bright and dark, bright and dark spots. So this is the darkest spot, dark one, the dark one, the dark one. So this is how we locate the constructive or destructive interference pattern. This is a question from the past paper as well, जिसमें उसने यही कहा था कि डार्क पॉइंट्स और ब्राइट पॉइंट्स के ऊपर लाइन ड्रॉ कीजिए एंड लेबल द लाइन एज द कंस्ट्रक्टिव लाइंस और द डिस्ट्रक्टिव लाइंस. समहाउ कुछ इसी तरह की इंस्ट्रक्शन उसने क्वेश्चन में दी थी.
So you should remember how to locate the constructive and destructive interference pattern. All right. So this is about the interference, destructive एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमने स्टडी किया है. ठीक है. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. ये अटैच फाइल वही पैटर्न मुझे डिस्कस करना था. ये थ्योरेटिकल डायग्राम दिखा दी इसकी एंड ये डेफिनेशन हो गई. राइट नाउ अब हम इंटरफेरेंस से फर्दर आगे बढ़ रहे हैं. वी नीड टू पर्टिकुलरली स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट with the help of an experiment called माइकल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये वही यंग साहब हैं जिन्होंने यंग मॉडुलस वाले यंग साहब. ठीक है. तो हम इनका एक्सपेरिमेंट हमें स्टडी करना है. सो लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट. ऑल राइट, दैट्स अ young double slit experiment. Now on this slide you can see I've just wrote an introduction because this experiment has got a history in the mankind history, and that is what the one of the only kind of experiment in the history of mankind which enable us, and still we can do right now today as well, enable us to measure the wavelength of a light which is in order of 10 की power minus 7. You can see the order of the light, but we can measure the wavelength of this order by using the ordinary laboratory scales. This was the beauty of this experiment. That's why, and it was the first ever attempt to measure the wavelength of a light. And when it was performed, the measurements were more than 90% accurate. So how he did that? This is amazing. This is something amazing. This experiment, which is also referred by his name, Young's double slit experiment, is sometimes called simply the two source interference experiment or double slit experiment. Now, you guys need to understand the experimental setup. ये introduction obviously आपको नहीं बताना. This is just for your interest and a general knowledge. But for the experimental setup here, right, we are going to study the label diagram for the apparatus required, the setup, how it was launched. You only need to explain the setup. You need to understand the setup. You should know the different parts of the diagram. Okay, how you can label it. So I just picked up this diagram from a book, Young's demonstration of interference, जिसने उस टाइम पर जब demonstrate किया था, तो how he used that, what he did actually. He performed this experiment in a dark room where he placed a monochromatic white source like sodium lamp. You remember I told you about the condition for the interference, monochromatic. Waves should be monochromatic, matlab pure light. So he used a monochromatic light source and then he placed a single slit, a cardboard having a very small narrow gap so that barely only light can pass. That he called as single slit S. Okay, the light since go in all the directions, but using the slit will do one thing. It will limit the light only in one particular direction depending on the size of the slit. This angle can be further larger if I adjust the gap. Okay, so he placed single slit, then he placed double slit, another cardboard having two narrow slits, and the two narrow slits have a separation which was exactly, okay, hold on, come on, okay, ठीक है, this separation between S1 and S2, the midpoint was exactly in front of the single slit area. This was the precision, this was the calculation. ये deliberately रखा गया था. ठीक है. So S1 and S2 are separated by an amount. Fine. सिंगल स्लिट डबल स्लिट में बीच में गैप कितना है ये भी कैलकुलेटेड था, सब चीज़ें कैलकुलेटेड थी. Then he placed quite a far away another
white screen paper as just a screen. The diagram is not to the scale obviously, but let me tell you one thing, that this gap was incredibly greater than this gap was let's say the gap G was incredibly greater than the gap between the two slits. There was no match. एक अंदाजे के मुताबिक प्रैक्टिकली अगर आप डबल स्लिट बनाना चाहें तो द गैप बिटवीन S1 एंड S2 शुड बी इन अ रेंज ऑफ मिलीमीटर एंड द गैप बिटवीन अ डबल स्लिट एरिया एंड द स्क्रीन एरिया इज इन द मीटर्स. इतना बड़ा फर्क है. ठीक है. सो एनी हाउ, so this is the original diagram. So now when light comes from S1, it will disperse in the same way. अभी पिछली स्लाइड में हमने स्टडी किया है. It will disperse in this way and you will have interference. Sorry, the images of the light from the S1. Same way the images of the light from S2 can be located on the screen here. And obviously they will going to meet somewhere. Going to meet somewhere. Let me change the color. So they will meet here, here. ये कटिंग पॉइंट्स हैं, ये कटिंग पॉइंट्स हैं, ये सारे कटिंग पॉइंट्स हैं. यहाँ दोबारा बनाता हूँ. ये है राइट, ये है सॉरी एक्चुअली पिक्चर पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी प्रिसिशन स्टाइलस को हैंडल करने में नॉट डेट परफेक्ट. सो ये जो रेड डॉट्स हैं यहाँ पर आपके पास ब्राइटेस्ट इमेज क्रिएट हो रहा है. इसी तरह डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट गोज अप द स्क्रीन एंड बिलो द स्क्रीन. तो एक पूरा पैटर्न बन रहा है. सो दिस होल सेटअप इज अ डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है. All right. So this was a setup: single slit, double slit, and the screen. All right. Now what he did actually in this experiment setup, light from the monochromatic source falls on a single slit S, followed by the double slit S1 and S2. Experimental setup diagram ये आ गई. पहला पॉइंट सेटअप को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइट फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स falls on a single slit S followed by double slit S1 and S2. When light from double slit falls on screen, they produces patterns of interference for light or of light. So you can see these patterns here. These patterns are composed of series of dark and bright fringes or the bright spots, the same thing. Okay, जैसे अभी हमने पीछे बताया था यहाँ पर. So light from single slit followed by the double slit will approaches to the screen. An interference pattern will be formed. Okay, now these are the series of dark and bright fringes. Mathematically, in order to calculate the wavelength of a light used to study the interference pattern, a relationship is used as follows, where lambda is equals to ax upon d. ठीक है. This relationship कि हम कैसे लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, एक फार्मूला है जो कि इस सेटअप से निकला है. इसकी एक ट्रिग्नोमेट्री है ऑब्वियसली. ठीक है. उस डेरिवेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. सो इस सेटअप को, डबल स्लिट के सेटअप को यूज़ किया जाए तो वी हैव दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स ओवर डी. नाउ दीज थिंग्स नीडेड टू बी एक्सप्लेन, वेयर ए, स्मॉल ए, गैप बिटवीन S1 एंड S2, दो स्लिट्स के बीच का गैप स्मॉल ए कहलाता है. ये दूसरी डायग्राम है, थोड़ी सी ज़रा क्लियर डायग्राम है. इसमें वेव फ्रंट्स को नहीं दिखा रहा हूँ. तो ये S1 ये रहा, दिस इज S1, दिस इज S2. S1 और S2 के बीच का जो गैप है दैट्स कॉल्ड स्मॉल ए. दिस इज स्मॉल ए हियर. देन द गैप बिटवीन द स्क्रीन एंड द डबल स्लिट एरिया इज कैपिटल D. दिस इज कैपिटल D ओवर हियर. Now, what is lambda and x? The lambda is a light which we are using to study the pattern. There is a lambda. This one is a lambda. Now, what is the x? X is considered as when the light of wavelength is incident on a double slit, the separation of the bright fringes on the screen is called x.
X is called separation between central bright spot and the very next bright spot, either above or below the zero order. You know that मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेंटर से आने पे लाइन ये यहां जो हिट करेगी, दैट्स अ ब्राइटेस्ट पॉइंट. अब इस ब्राइटेस्ट पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट ब्राइटेस्ट पॉइंट आएगा ना, इधर दिस ब्राइटेस्ट पॉइंट इज अबव or below, doesn't matter. This is called X in the pattern. So A, D, X and lambda got a relationship which is called lambda is equals to AX over D. So now see, can't we measure small a with an ordinary scale? Can't we measure capital D with an ordinary scale? Can't we detect on the screen, on the white screen paper, the value of X with an ordinary scale? So I can, if get X, D and A and putting them in this formula, I will get the lambda which cannot be measured by an ordinary scale. But lambda can be now calculated. So this is somehow a measuring tool for measuring the wavelength of a light, wavelength of any wave. And this is such an important tool that even nowadays we still use this experimental setup to measure any like alien light even in during investigation. At NASA and everywhere they have their laboratories in the dark rooms. They use the anomalous light or whatever the light is being investigated. They use the setup to get the lambda factor. और इसी तरह जो पूरा स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है विब की और वॉलेट से लेकर इंडिगो तक या गैमा रेजेस से लेकर रेडियो वेव्स तक, इन सब के जो वेवलेंथ के पैटर्न्स लिखे हुए आते हैं, यू कैन सी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो वेवलेंथ मेजरमेंट का जो टूल है वो यही टूल है, इसके थ्रू हम यूज़ करते हैं इसको. राइट नाउ जैसे NNB पॉइंट, purpose of single slit is to produce coherent light sources. Okay, purpose of double slit is to produce two coherent light waves. सिंगल स्लिट से हम कोहेरेंसी मेंटेन रखते हैं, डबल स्लिट से हम सिंगल लाइट को डबल में स्प्लिट करते हैं, तो हमारे पास दो कोहेरेंट वेव्स आ जाती हैं. ये भी मुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल. एक दफ़ा लाइक ये सवाल भी आ चुका है पेपर में कि लाइक यहाँ पर S और S1 S2 की जगह अगर दो लाइट लैम्प, इंडिविजुअल लाइट लैम्प्स रख दूँ, S1 and S2, दो इंडिविजुअल लाइट लैम्प्स, एंड नाउ पुट द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दैम, तो क्या ये इंटरफेरेंस नहीं करेंगे? ये they will definitely interfere, but this meeting up is simply called the superposition of the two waves. It is not called interference, because के दो identical light sources, दो separate identical light sources, no matter how identical they are, but they cannot create the coherency, they cannot establish the coherency requirement. So therefore slits are required and that's necessary. So purpose of single slit is to produce coherent light sources, purpose of double slit is to produce two coherent light waves. Now we have certain limitation for this formula. Lambda is equal to AX over D. And what are they? Very limitation. It should be on the screen. Okay. And this is what X fringe spacing is proportional to D if lambda and A is constant. This decreases the percentage error in measuring X but reduces the intensity or brightness of a fringe on the screen. ऑब्वियसली एक्स जितना वाजे होगा स्क्रीन पर, सेंटर पॉइंट, सेंटर ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, अब अगर ये गैप फ्यू मिलीमीटर है तो पढ़ने में दिक्कत होगी ना. तो अगर मैं डी बढ़ा दूँ तो एक्स बढ़ जाएगा, तो ये गैप पढ़ने में आसानी होगी. हेंस परसेंटेज एरर इन मेजरिंग एक्स वुड बी डिक्रीज. लेकिन जब क्योंकि पॉइंट्स दूर चले जाएंगे तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस में फ़र्क पड़ता है, तो वो दोबारा प्रॉब्लम दे सकता है. तो दिस इज़ वन आइडिया. एक्स एंड डी का ये फ़ायदा है लेकिन ये एक नुकसान भी है. ठीक है जी. ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon a इफ लैम्डा एंड डी इज कांस्टेंट. मींस डबल स्लिट के गैप को, ये गैप को यहां रखता हूं, ठीक है, तो लाइट यूं जाएगी और लाइट यूं जाएगी, फाइन. लेकिन अगर ये गैप, मतलब ये गैप मैं बड़ा कर देता हूं, ये गैप मैं और मजीद बड़ा कर दूं, सी हाउ. अब ये गैप
यहाँ है, ये गैप यहाँ है, तो लाइट अब जाएगी तो इंटरफेयर तो करेगी, लेकिन द पॉइंट इज द ब्राइटेस्ट पॉइंट, द नेक्स्ट ब्राइटेस्ट पॉइंट, दे जस्ट कोलैप्स। तो ए के बढ़ने से एक्स कम होता है, जितना ये कोलैप्स होंगे उतना मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी या ब्राइट पॉइंट्स को रिकग्नाइज करने में दिक्कत होगी। इन रियल अगर प्रैक्टिस में बात करें तो स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट्स मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने डिस्टिंग्विश पॉइंट्स होंगे सॉरी, मैं आसानी से इन्हें पढ़ सकूंगा। तो इसके लिए मुझे एक्स को मेंटेन करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ एक्स, सारे पॉइंट्स हम एक्चुअली एक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन द वेव वी आर यूजिंग। If we are using the wave of a wavelength greater, x will be greater by comparing d and a constant. लैम्डा मतलब रेड लाइट का लैम्डा, अगर रेड लाइट से मैं इंटरफेरेंस पढ़ूंगा तो मेरे एक्स ये ब्राइटर पॉइंट सेपरेट होंगे, बड़े क्लियरली वाजे होंगे। अगर मैं वॉयलेट लाइट से इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ूंगा तो मेरे सारे ब्राइट पॉइंट्स मर्ज हुए होंगे, उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, देखना मुश्किल होगा। ठीक है, तो दैट्स 1, 2 and 3, ये 3 तो मैथमेटिकल हो गए। बाकी आपके प्रैक्टिकल हैं, इनका मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ एनी ऑफ दीज 3 स्लिट्स, increasing the width of any of 3 slits, increasing the brightness of pattern but fringes become blurry. That's B, actually B is missing here. Anyway, brightness of pattern but fringes become blurry. सारे विड्थ बढ़ाऊंगा, अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा आएगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, फोकस आउट हो जाएगा, तो ब्लरी हो जाएंगे। मूविंग एज क्लोजर टू S1 S2 only increases the brightness of the fringes but no effect on X. मीन्स ये बैकग्राउंड में यहाँ पर ये S, ये फासला जितना कम करूँगा सोर्स उतनी कम आना क्लोज होना शुरू हो जाएगी। द सोर्स गेटिंग क्लोजर टू द स्क्रीन, तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, लेकिन इससे X पे कोई फ़ायदा नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज के X इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस गैप। ऑलराइट, सेम वे if white light is used instead of the mono source, मतलब मोनोक्रोमेटिक को हटा के एक वाइट लाइट 7 कलर्स वाली लाइट यूज कर लूँ, देन इंटरफेरेंस आई पैटर्न्स, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट वाइट लाइट मैक्सिमा एंड द मल्टी कलर फ्रिंजेस अराउंड इट। दैट्स ऑब्वियस। अब सारे कलर्स क्योंकि आ रहे हैं तो ब्राइटेस्ट पॉइंट के ऊपर सारे कलर मर्ज होंगे, तो दोबारा मेरे पास एक वाइट लाइट, एक वाइट स्पॉट होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो फ्रिंजेस सेपरेट होना शुरू होती हैं, तो हर कलर अपनी अपनी फ्रिंज बना रहा होगा। तो वी हैव मल्टी कलर फ्रिंजेस अबव एंड बिलो। If a screen is tilted as shown, see the screen, this is the screen and double slit S1 and S2. Screen. If a screen is tilted as shown by keeping a lambda constant, the X above central maxima, let's say this is a center point just in front of the center point. So like, इसके बिल्कुल सामने ये center point, center of the screen कहलाता है। So like, इससे ऊपर के लिए, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से ऊपर के लिए जो एरिया है इट्स ग्रेटर देन डी है, या इसका डी ग्रेटर है, और नीचे के एरिया के लिए डी छोटा है। सो द एक्स अबव सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस, बिकॉज ऊपर के लिए जब डी बढ़ता है तो एक्स बढ़ जाता है, एंड ब्राइटनेस डिक्रीजेस। सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर एक्स बिलो द सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि नीचे डी कम है तो एक्स कम हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज डन। If two separate sources are used instead of S1 and S2, सी मैंने शुरू में बताया था, सेपरेट सोर्सेज को यूज़ कर लो, S1 S2 ना यूज़ करो, तो कोई भी पैटर्न डिस्कस नहीं हो सकता, बिकॉज के स्क्रीन हैज़ नो कोहेरेंसी, द कंडीशन डिड नॉट मीट द कोहेरेंसी रिक्वायरमेंट एंड द स्क्रीन विल बिकम इवनली इल्यूमिनेटेड, दैट्स इट, एक ब्राइटेस्ट इमेज बनेगा। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम वन स्लिट इज रिड्यूस्ड एंड अदर रिमेन्स सेम, द ब्राइट फ्रिंजेस बिकम डार्कर as overall intensity drops and dark fringes become bit brighter as no more cancellation, but X has no change. Intensity of light emerging from one slit is reduced, मतलब यहाँ पर एक स्लिट के ऊपर आप पेपर रख दें, बटर पेपर रख दें, सी इसको ढाँप दें, लाइट फिर भी आ रही है लेकिन आप छन के आएगी, रुकावट के साथ आ रही है, सो अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाएगी। द ब्राइट फ्रिंजेस बिकम अ लिटिल डार्कर, फेंट होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि इंटेंसिटी ड्रॉप हुई है। Dark fringes become bit brighter. Why the dark fringes become brighter? Because बेटा कि अब जब ये लाइट आ रही है, छन कर आ रही है, ऑब्वियसली, तो जहाँ पर डार्क स्पॉट यानी कंप्लीट कैंसिलेशन हो रही थी, अब वहाँ कैंसिलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कैंसिलेशन कब हो रही थी, जब दो सेपरेट डार्क मिल रहे थे। तो अब एक डार्क तो मिल रहा है लेकिन दूसरे की डार्कनेस पे फर्क आ गया है, ठीक है।
तो वो इस वजह से कैंसिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जब कैंसिलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो जहाँ बिल्कुल डार्क स्पॉट था वहाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस आना शुरू हो जाती है। डार्क स्पॉट्स या डार्क फ्रिंजेस बिकम अ बिट ब्राइटर। दिस इज क्वाइट लाइक कंफ्यूजिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कैंसिलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा जब ओवरऑल लाइट की इंटेंसिटी। और आपने किस तरह चेंज किया है कि आपने S1 को सेम रख, S1 को आपने रिड्यूस किया है, S1 से आने वाली लाइट को रिड्यूस किया है, S2 से आने वाली लाइट आप वैसे ही आ रही है। तो अब आपके पास फर्क, जहाँ देखो जहाँ ब्राइट पॉइंट है वहाँ ब्राइट पॉइंट तो स्टिल है, लेकिन अमाउंट ऑफ ओवरऑल लाइट कम हो गई। अच्छा, जहाँ पर डार्क पॉइंट है, डार्क पॉइंट में क्या था, एक ब्राइट और एक डार्क दोनों मिल रहे थे, तो कंप्लीट कैंसिलेशन हो रही थी। लेकिन अब जो ब्राइटर उसी डार्क में मिल रहा है वो ब्राइटर कम हो चुका है ना, तो कैंसिलेशन डिस्टर्ब हो गई। कैंसिलेशन डिस्टर्ब तो डार्क पॉइंट अब डार्क पॉइंट नहीं रहा, थोड़ा सा ब्राइट हो गया। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर लैम्डा इज इक्वल टू AX ओवर D। ठीक है, ये दोबारा देख लीजिए, इंट्रोडक्शन, डबल स्लिट का, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का। ये आई डोंट नीड दिस वन एट द मोमेंट। ठीक है जी, राइट। ये पूरे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं वीडियो में, आप इनको प्लेबैक कर करके सारे पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इंटरफेरेंस पैटर्न्स बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है AX अपॉन D। इस तरह हम यहाँ इन चीज़ को इसको फाइंड आउट करते हैं, राइट। ये दो NB पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको याद रखिएगा। फिर लिमिटेशन फॉर लैम्डा है, इन पॉइंट्स पे सवाल बनता है। ये नीचे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पेपर से कंपाइल किए हैं, ठीक है। ये पेपर से कंपाइल किए हुए हैं। सो दिस इज डिस्कशन ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम नेक्स्ट सिटिंग पर इनके क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, राइट। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डायफ्रैक्शन होगा, इसकी वीडियो इसके बाद आएगी। थैंक यू।